Good morning, everyone. This is Ankur Maheshwari from Echo India, and today we are going to do conduct a Spox training for all of you. And I would like to welcome Plas sir to do the training. Plas sir, please continue. Hello everyone, thank you Ankur. I'm Palash, part of the training team at Echo India, and the objective of today's session is to take you through some of the basic things about Echo that you should know as spoke participants of this program, and maybe talk a little bit about Zoom because we are going to use this platform to conduct this program. So if anyone has any questions related to um, how to use Zoom or basic understanding about Echo, feel free to ask your questions. So I am going to start with a presentation, and I'll show you what Echo is in a few slides, and also basic features of Zoom that you should know. If anyone has any doubts, please feel free to unmute yourself and ask your questions. पलाश जी डॉक्टर पाटनी फ्रॉम अजमेर। बस मैं एक Yes, इंफॉर्मेशन दे दूं सभी पार्टिसिपेंट्स को कि अभी yes, 11 बजे तक ये स्पॉक्स ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 11 बजे से डिफिकल्ट टू ट्रीट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टू right. ट्रीट क्लिनिक सेशन। तो सब लोग बने रहें। Thank you, sir. So Project Echo, Echo is actually a full form. ECHO stands for Extension for Community Healthcare Outcomes, and the objective of Project Echo is to democratize medical knowledge and improve the access to best practice care to the underserved areas all over the world. And the goal is to improve the access to high quality care for 1 billion people by 2025. That is the long term goal that we have. So you are all part of that Echo community now. And I just want to share the slide related to Echo model. So this is the model that we use to implement all our Echo programs. So four major principles: A, B, C, and D. A stands for amplification. That simply means using technology to leverage scarce resources. So what are these scarce resources? The resources are mainly time, knowledge, and money. So the idea is people do not have to travel long distances to get trained on a particular subject. You can log in through the virtual platform, that is Zoom. That is the part of technology that we're using to leverage those scarce resources and disseminate the knowledge. Second principle is sharing best practices to reduce disparity. So in this principle, it simply means that there will be a subject matter expert in every Echo session that you attend, and they will be sharing best practices through a didactic presentation. And they will be talking about important concepts about a particular topic, or maybe share a few guidelines on the same. So it's basically a presentation that the expert gives to all the spoke learners in the session. The third principle is case-based learning to master complexity. So this is the most important principle, and in this we encourage all our participants, all the spokes, to present cases during the session. So the idea is that you share your problems with the hub team, and the subject matter experts will give you recommendations as to how you can solve this case in your own work area, right? And the fourth principle is web-based database to monitor outcomes. So in this principle, what we mean is we are tracking all the data that is generated through the Echo session. That is, for example, attendance of the participants, who is attending, from where are they attending, what is the name of the organization. We track all this data on a tool that is called iEcho Spark, right? So iEcho Spark is the web-based database that we use to monitor the outcome. So once the data has been entered into iEcho Spark, you can show the impact of your program by generating different types of reports, etc. So coming on to Zoom. So for IT requirements for spokes, you only need one of these things, either a laptop
or a desktop with webcam or a tablet or mobile phone. Our recommendation is, if you are planning to join Echo sessions, the ideal way to do it is through a laptop. So join your sessions through laptop because the Zoom interface is much easier on a laptop. Smartphones, in smartphones, it's a little difficult and the interface is different. People tend to get confused. That is why laptop is the best way to attend these sessions, and a decent internet connection at your place um, along with one of these equipments helps you to attend these sessions without any issues. So first of all, I'll request everyone to kindly download Zoom on their systems. If you don't have it already, you can download it through zoom.us/download. URL has been written on the screen. And once you start Zoom, this window will appear on your screen. So all you have to do is join the meeting with the meeting details like you've already done today. आप सभी ने आज मीटिंग ज्वाइन की है, मतलब आपको ये पता है कि कैसे करते हैं. ये Zoom की So meeting join करते समय बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, have to name yourself correctly so that the hub team can mark your attendance. So यहाँ पे आपको अपना नाम clearly mention करना है. As you can see यहाँ पे नाम लिखा है, organization का नाम लिखा है, आपकी location लिखी है. So the hub team, in this case STDC Ajmer, would be able to track the attendance on an individual level and at an organization level also. Right. So one of the things you have to be mindful of in any Echo session is that these sessions, when you join in, a lot of people forget to join the audio in through Zoom, right? So from the bottom left hand corner, you see an option with the headphones that's called join audio option. So you have to join that audio by computer in order to be able to listen to all the discussion that is going on. अगर आप audio join नहीं करेंगे तो आपको ना किसी की आवाज सुनाई देगी, ना आपकी आवाज किसी तक पहुंचेगी. तो इसीलिए कंप्यूटर ऑडियो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी मीटिंग में अगर आपको लगे कि आपको आवाज नहीं आ रही है लेकिन वीडियो दिखाई दे रहा है, सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कैन बी आपने ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं किया. सो वो चीज का ध्यान रखना है. एंड this is what the Zoom interface looks like. So basic features that I want to talk about: mute, unmute. आपके bottom left पे mute, unmute का option है. So just have to be mindful during the session. Always stay muted to avoid any disruption of the session. And if you wish to speak, if you have a question, you can of course unmute yourself and ask your questions. Always keep your videos on from the bottom left hand corner again. For a good interactive session, keep your videos on. And if you're facing internet issues, in that case, you can keep your videos off. But otherwise, try to keep your videos on so that we can see each other and have a good interactive session. Share screen feature is a very important feature on Zoom. I'm assuming आप लोगों को शायद already पता हो क्योंकि because of the कोविड सिचुएशन हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं. सो शेयर स्क्रीन के थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं सेशन के दौरान. एंड जैसे मैं अभी ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को दिख रही है अपने स्क्रीन पे, वो मैं शेयर स्क्रीन के थ्रू कर रहा हूँ. सो वो आप ये ग्रीन कलर का आइकन जो आपको बॉटम पे दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं. एंड उसके अलावा एक चैट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ या हब टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. सो चैट पे क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और कमेंट्स that you want to contribute to the discussion, you can do that through the chat feature, and it is very useful. Chat feature is very useful if your internet is not working well. अगर आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है तो आप अपने पॉइंट्स, अपने क्वेश्चंस चैट पे डाल सकते हैं और हब टीम का आंसर आपको देगी. तो शेयर स्क्रीन आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे तो ये विंडो अपीयर होता है आपके स्क्रीन पे. शेयर स्क्रीन में एक ट्रिक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं उसे अपने स्क्रीन पे बैकग्राउंड में ओपन करके रखिए पहले से, राइट?
फिर आप जब जूम की विंडो पे वो ग्रीन कलर आइकन पे शेयर करेंगे, ये विंडो खुलेगा आपके स्क्रीन पे। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या शेयर स्क्रीन करना है। तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट आपने बैकग्राउंड में खोला है, वो यहाँ बॉटम रो में अपीयर होगा। आप उसको सेलेक्ट करके बस शेयर स्क्रीन पे यहाँ बॉटम राइट पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। वीडियोस शेयर करते समय, जस्ट इन केस आप सेशन के दौरान कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये बॉटम लेफ्ट पे यहाँ शेयर कंप्यूटर साउंड पे ध्यान रखना है। तो शेयर कंप्यूटर साउंड पे क्लिक करके फिर शेयर स्क्रीन करेंगे अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं। क्यों? अगर आप ये ऑप्शन चेक मार्क नहीं करेंगे शेयर कंप्यूटर साउंड का, और आप वीडियो शेयर स्क्रीन के थ्रू प्ले कर देंगे, तो सबको वीडियो तो दिखाई देगा बट किसी को आवाज नहीं सुनाई देगी। सो ये शेयर कंप्यूटर साउंड पे ध्यान रखना है। एंड अपने आप को एक रीनेम करने का ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सो यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका नाम क्लियरली नहीं मेंशन्ड है, राइट। सो आप एक सिंपल सा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अपना नाम डालिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालिए, और अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं, राइट। सो वो कैसे कर सकते हैं, नीचे आपको पार्टिसिपेंट्स टैब का ऑप्शन दिख रहा होगा। पार्टिसिपेंट्स टैब पे क्लिक करके सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट लिस्ट में आप ही का नाम आएगा। सो आप उसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके जाइए, और वहां पे एक मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रीनेम वहां पे आपको दिख जाएगा। रीनेम पे क्लिक करके आप अपना नाम, जैसे आप लोग चाहते हैं आपको एड्रेस करें, वो नाम आप वहां पे लिख सकते हैं। और सिमिलरली नीचे रिएक्शंस पे एक और टैब है, नीचे रिएक्शंस का, वहां पे क्लिक करके आप रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सो आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे तो एक हब टीम पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाता है कि this person has raised his or her hand, so they want to ask you a question or share a comment. So this is a very useful feature to notify the hub that you want to say something. And in terms of etiquettes, कुछ चीजों का आपको बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है कि सेशन अटेंड करते समय हमेशा अपने आप को म्यूट पे रखें। अगर कुछ पूछना है तब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वीडियो जहां तक हो सके अपना वीडियो हमेशा ऑन रखें ताकि सेशन ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव हो सके। और आप कैमरा ऑन करके हमेशा अपने फेस पे फोकस करें ताकि तब आप जब आप बोलें तो लोग आपका चेहरा देख सकें। एंड इंट्रोडक्शन राउंड अगर कभी होता है तो उसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अनम्यूट करके अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम और अपना लोकेशन बता सकते हैं। उसके अलावा ट्राई करें कि अपना फोन आप सेशन के दौरान यूज ना करें टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस। इंटरनेट स्पीड एडिक्वेट हो। सो जूम पे ज्यादा हाई इंटरनेट स्पीड की जरूरत नहीं होती है सेशन कंडक्ट करने के लिए। एज स्पोक पार्टिसिपेंट्स अगर आपके पास 2 MBPS का इंटरनेट भी है तो वो गुड इनफ है सेशन कंडक्ट करने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा, आप रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आप सेशन को स्मूथली अटेंड कर सकते हैं। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। If anyone has any questions, I'll be happy to answer them for you. किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एको, रिलेटेड टू जूम? Right, there seems to be no question. Ankur, back to you. थैंक यू सो मच प्लास सर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जूम के रिलेटेड कि अगर आपको कभी कभार आपको ऑडियो नहीं सुनाई देती है सेशंस में, जब मोस्टली आप कहते हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं कि वो ऑडियो क्यों नहीं हमें सुनाई देती है सेशन में कभी कभार। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे कि अभी प्लास सर ने बोला था कि अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अभी, जिनके कोई इंटरनेट इशू नहीं है, तो प्लीज़ अपने वीडियोस ऑन रखें ड्यूरिंग द सेशंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन अपने। क्लास से ट्राई करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें।
it seemed like we don't have any questions. So I would like to thank Plaza for giving their time to train on us on Zoom to how to use the Zoom and other options. Thank you so much, sir, for joining us. And Thank you I for would, having me. and we will continue the session with the case presentation at sharp 11 o'clock. So please don't left the meeting. We will continue this meeting at sharp 11 o'clock. We just have a 10-minute break until then. अंकुर जी अब चालू करें. Yes, sir. Please हाँ. continue, sir. So, good morning and welcome to STO sir and all participants in session of difficult to treat TB clinic. This is second session of state on eco platform. Today's topic is difficult to treat drug resistant pulmonary tuberculosis. Today's session expert is Dr. Shubhra Jain, Associate Professor, Department of Respiratory Medicine, SMS Medical College and Institute of Respiratory Diseases, Jaipur. And presenter, Dr. Akhilesh Verma, MD Chest and TB, Medical Officer, District TB Clinic, Biawar. First, I invite to STO sir for directions. STO sir, please. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, morning, sir. sir. Yes, sir. How are you? Thank you. I am happy that many participants are there joining this meeting, and I especially thank Dr. Jain who accepted my request to be an expert in this difficult to treat clinic. And I hope her guidance will help all the DTOs, and all DTOs will learn from her. I once again welcome all the participants, and I request to please continue it. Thank you. Now I invite Dr. Akhilesh Verma to present the session. Dr. Akhilesh. Yes, sir. Well, hello everyone, and firstly, good morning. And firstly, I would like to thank STU sir and ST for giving me this immense opportunity to present a case of drug-resistant TB, which is actually really difficult to treat for us because the patient is very young and the patient is not improving clinically. So first, I'll start with my presentation. Slides are visible. Yes. So, so today we would like to discuss a 18-year-old male who's a student, and patient belongs to Biawar, Rajasthan, and the patient's total duration of illness is 2 years. Patient came to us 2 years back with the principal complaints of loss of weight, and patient is having increased shortness of breath on exertion since past 6 months. Patient is now complaining of fever since past 50 days, and patient is having complaints of cough with expectoration and generalized weakness since past 15 days. When we asked the family history of this patient, we found out that this patient's elder brother developed pulmonary tuberculosis 4 years back, and that brother died in 2019, 2 years later after developing the TB. And
and other family members never developed any sign and symptoms of tuberculosis. So let's discuss the treatment history of this patient. This patient came to us in March 2020. At that time, patient actually came to us with symptoms of loss of weight. Then we did smear for this patient, which came out positive. And at that time, patient was started on 4 FTCs. But after when the CBNR report came as R resistant and second line LPA came as FQ resistant with actually mutation in wild type 3 gene and mutation in 3C gene and second line injectable sensitive. So then at that time the patient was started on modified all oral treatment from April 2020, and the regimen that was decided was firstly what we started was bedaquiline, cycloserine, linezolide, clofazimine, and in place of fluoroquinol, FQ, what we started is ethionamide and pyrazinamide. Because at that time MUT3C gene was mutant and wild type 3 gene was mutant, so at that time we could not use FQ. So at that time we did a modified what we started is modified regimen. So we did not use FQ and in place G ma'am. I just want to ask here one point, that you have taken 2 drugs from group A, that is bedaquiline and linezolid. Is it so? No? And Yeah. then you have taken clofazimine and cycloserine from group B. Yeah. This is okay. Then why you opted for like ethionamide, not amikacin? Yes, ma'am. Because amikacin should be preferred as in reference in replacement sequence. First is Z, which you have taken, but you could have taken amikacin at this stage in place of ethionamide. This is one of the things we can do at that time. Yes, we actually should have taken second injectable previously itself at that time. Then actually during this course, we did, yes, ma'am. During this course, during follow-up, what did we find out is that at that 3rd month follow-up, culture came as positive. Then after that, 8 months, 10 months, and subsequently 12 months, 4 cultures are continuously positive in this case. So what we did is we declared this case as treatment failure, because that case was not able, seroconversion was not there up to 8 months. So we declared this case as treatment failure. And also the patient was deteriorating clinically with newly developed symptoms of shortness of breath and cough, and the patient was declared treatment failure. Then again the patient was re-evaluated, and what we did is we have sent that patient for first line LPA and second line LPA. In first line LPA, what we found out is this patient came as R sensitive, R resistant, and isonase and INH resistant, that is high level. Both CATG and INH resistance was there. And in second line LPA, MTV detected with FQ resistant as before, and second line injectable was sensitive as before. So what we did is we did a total analysis of its mutations, and to actually evaluate what are the medicines can be started for this patient. For isoniazid, what we did is in first line LPA with that actually CATG mutation, wild type 1 gene was absent and mutation type of 1 gene was present. And subsequently in INHA, wild type 2 was absent and that MUT3A was present. So in this case, both isoniazid and ethionamide could not be given. So these 2 drugs are ruled out. Then for rifampicin, RPOB gene mutation was there. So in this, wild type 3 was present and mutation type 3 was present. So in this case, R is ruled out. So 4th drug, 3rd drug became FQ. FQ, what happened?
same as before, wild type 3 gene was absent and mutant type of 3C gene was present. So in this case also, both moxifloxacin and levofloxacin could not be given. And with the single drug that can be useful is, as ma'am has mentioned, as second line injectables. In this case, no mutation has been found and it is found sensitive. So according to this analysis, what we did is we prepared a new regimen for this patient. What we have prepared for this patient is, we have started with firstly delaminate. We started, then from second line injectable we started a amikacin, then few drugs from previously from third drug what we used is linezolid. Then from group D we used clofazimine and cycloserine, and we used ethambutol in this patient according to replacement sequence. And we started this regimen from April 2021, and this patient is already on treatment since past 4 months, but still the patient is having clinical actually symptoms are not reducing, and that with X-ray appearance is actually that X-ray appearance is getting worse, and the patient is not at all improving with this regimen. Still that third month follow-up has been sent, and the report is awaited for that third month culture. Then let's see about the radiological changes. When we started this patient on April 2020, at that time actually right upper zone was involved. Then in September 2020, the upper zone and right upper zone and mid zone involvement was there, means the disease is progressing. Then after that, in May 2021, fibrocavitations appears in right upper zone, and after that, in July, the disease spread to that actually bilateral lung set, that to the bilateral lung zones, the disease has spread. So, what are our questions? What should be the management plan of this patient? And what are the other required investigations that we can do to diagnose or to actually decide that management for this patient? Okay. So first of all, I would like to congratulate Dr. Akhilesh for presenting such a well worked up case. All mutation studies done timely, and at least there is no fault on part of doctor to delay the diagnosis. And important, patient is unfortunate that he is not getting any response. So this is basically non-responsive resistant TB case. Here I will like to give a few suggestions from starting, that when patient was diagnosed as a case of drug-resistant TB, and at that time also patient was quinolone resistant. We could not give high-dose moxifloxacin at that time because mutation was present. So at that time, if we would have added two drugs together as per RNTCP, like bedaquiline along with delaminate, then linezolid from group A, again clofazimine and cycloserine. If this would have been the sequence, like bedaquiline and delaminate given together, which is available, so at that time we could have done this. This is one of the point. Anyway, we have started with bedaquiline, not delaminate together. So now at this point, what we can do is, till now we have done only genotypic methods, all the second line LPA, first line LPA. So we can now go for phenotypic methods. That is, we can go for liquid culture. Liquid culture DST, it will take around 42 days, and even before that we can get the report. So if we do DST for other drugs also, like linezolid, clofazimine, cycloserine, whether these are effective or not, then we will be able to modify our regimen.
So, and another important thing what we can do in this case, as this is likely a case of pan drug resistance seems to be because he is not getting any response. So we can, if our officers agree, then we can go to NIRT Chennai because there only drug sensitivity for bedaquiline and delaminate is going on. This is only one center in Bangalore. So we can send patient sample there and we can go for culture sensitivity of all drugs, including all first line drugs, all second line drugs, and bedaquiline and delaminate. Because this is not in Jaipur, even I asked microbiologists here also, but they are not doing drug sensitivity for bedaquiline and delaminate. They are doing only for moxifloxacin and linezolid. So this is one issue which we can help this patient by this way. At present, we can keep the regime. We have 4 drugs still we have not given. One is Celastin imipenem from group C. We have 3-4 reserve drugs. Another is powder pass. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Okay, okay, okay. What I'm saying is that we are left with 4 drugs from group C. One is amoxiclav, another is Celastin imipenem. These are the 2 drugs, and powder pass also we haven't given. So I think we can request to DCGI, drug controller, for addition of these drugs also for benefit of this patient, which we have not used earlier, because this is a failing regime. We have added bedaquiline, we have given everything for 6 months, 8 months, and patient is not getting any response. So now there is need for addition of 4 new drugs. I don't think that only addition of delaminate in this case will benefit, and amikacin will benefit this patient. We have to be more aggressive in this case, and we can add these 4 drugs as per, like, if DCGI allow us, so we can add these drugs. One is powder pass, another is Celastin imipenem, third one is amoxiclav, and amikacin we can continue. So these are my issues. And then another thing, what is patient oxygen saturation, Dr. Akhilesh? Yes, ma'am. Hello. What is patient oxygen saturation? Ma'am, oxygen saturation is actually completely normal. Patient is actually young, and patient is actually totally comfortable at room air. Okay. But nowadays the patient is having the patient is telling that patient is having a difficulty on breathing on exertion only. Previously, since last 1 month, the patient is having these new symptoms. Okay. At this point, we can also go for 2D echo to look for pulmonary artery hypertension. But I think that must not have developed because patient is having no pedal edema, no desaturation on exercise below 88. If patient has that, then we can go for pH, for 2D echo to look for pH. Rule out pH. This all we can do for this patient, and I hope you have checked all electrolyte, thyroid abnormalities, and other things. Actually, those things were actually completely normal. Yeah. Actually, those actually things were done during pre-treatment evaluation, and those things were completely normal. So let's see finally what is there. We can keep this patient on delaminate amikacin as you are keeping this patient, and we can add 2 more drugs at least now. One is amoxiclav and powder pass. For Celastin imipenem, we need percutaneous catheter. So that only will be given only if patient admit to some NDR TB center. May I ask 1 or 2 questions? Yes, sir. Yes, sir. Dr. Akhilesh. Yes, sir. When you started the treatment initially and the patient was resistant to fluoroquinolone. Yes. Then why did you replace this levofloxacin with ethionamide and pyrazinamide? What was in your mind? Yes, sir. Why didn't you follow the guidelines? And guidelines says that if levofloxacin we cannot use, go for moxi, and if even moxi we cannot use,
go for delaminate. Yes, sir. These are the basic Sir, guidelines. yes, sir. Why didn't you follow them? And please, Sir, please unshare the screen. sorry. Sir, actually, this was actually decided by actually that the DRTB committee at actually medical college level, sir. At that time, actually, this treatment was started for them in 2020, sir. This actually treatment was decided at medical college level from JLN, sir. Dr. Patni, what is your reaction? सर मैं ये बोला, ये इसलिए है कि एलपीए के जब इंटरप्रिटेशन हम करते हैं तो 3A के बाद मतलब 3B 3C 3D बैंड पे यदि म्यूटेशन आता है तो वो करता है कि वो मॉक्सीफ्लोक्सासिन से भी रेजिस्टेंट है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मॉक्सीफ्लोक्सासिन को रोक के इन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट मतलब मॉडिफाई किया है। मैं वही कह रहा हूँ, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का सब्स्टिट्यूट इथेनोमाइड और पायराजिनामाइड कहाँ लिखा है? ये तो इन्होंने उसका वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया यहाँ पे, रिप्लेसमेंट सीक्वेंस। हाँ, वहां तो डेलामिनेट लिखा हुआ है गाइडलाइंस में। जी अगर आप मुझको टाइम दें तो मैं आपको शेयर करता हूँ एक स्लाइड को, आप 1 मिनट पढ़ें उसको। इट क्लियरली सेज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, एट दैट टाइम जब पेशेंट को स्टार्ट हुआ था उस टाइम डेलामिनेट अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, 2020 अप्रैल में डेलामिनेट अवेलेबल नहीं थी। यदि मॉक्सी और डेलामिनेट दोनों नहीं दे सकते तो रिप्लेसमेंट सीक्वेंस में 2 ड्रग ऐड करनी थी। 2 ड्रग का रिप्लेसमेंट सीक्वेंस था पायराजिनामाइड, एमेकासिन, इथेनोमाइड, देन पास। तो फर्स्ट सीक्वेंस में तो पायराजिनामाइड ले ली थी और सेकंड सीक्वेंस में एमिकासिन लेनी थी। कैन यू सी दिस स्लाइड? जी सर। Can you see this slide? If levofloxacin cannot be used, replaced with moxi, and second, if moxi cannot be used, replaced with delaminate, and delaminate was available in 20. Who says that delaminate was? It may not be available at Ajmer, but at state level, that was available. सर, डेलामिनेट लगभग 6 to 8 मंथ तक अवेलेबल नहीं थी। हमारा प्रेफरेंस डेलामिनेट को ही था उस टाइम। हाँ, डेलामिनेट का केवल इतना था उस टाइम सर कि जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट कंटिन्यू डेलामिनेट है उनको तो डेलामिनेट कंटिन्यू की जाए, बाकी पेशेंट्स के लिए डेलामिनेट अवेलेबल नहीं थी अप्रैल 2020 में। नहीं, पर अगर ऐसा इंपॉर्टेंट केस था तो you could have requested us, we could have requested at the higher officers. बट उस टाइम सर ये तो जब ट्रीटमेंट फेलियर हुआ सारी ड्रग्स पे और अगेन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब हमारे लिए काफी डिफिकल्ट केस साबित हुआ। अदरवाइज काफी केसेज ऐसे हैं जिनमें हमने मॉक्सी का सब्स्टिट्यूट करके, सर ऐसे तो लगभग 30% केसेज ऐसे आते हैं जिनमें हाई डोज मॉक्सी नहीं दी जाती, तो उनमें यही सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है सर, पायराजिनामाइड और इथेनोमाइड या फिर पायराजिनामाइड प्लस एमिकासिन ऐड की गई एट दैट टाइम। अभी जब डेलामिनेट की अवेलेबिलिटी है तो हम दोनों चीज दे रहे हैं, डेलामिनेट और बेडाक्विलिन दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर शुभ्रा, व्हाट इज योर रिएक्शन? अगर हमने उस टाइम डेलामिनेट यूज किया होता इन प्लेस ऑफ दिस इथेनोमाइड एंड पीजेड, तो आज क्या हमको थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिल सकते थे? Sir, definitely additive. There is a study also, BPAL study going on that also suggests that addition of bedaquiline, delaminate along with linezolid, these three drug combination is very good. Even they are claiming about 90% effective rate. So, but the thing is that the availability of delaminate is a problem sometimes, and it was this was a problem in 2020 also. So yes, if we could have added at that time, probably patient would have been better. Okay. Now, what is your reaction? What is your reaction regarding use of amikacin instead of kanamycin? Is kanamycin a better anti-tubercular? Sir, do you agree? Used to use at our time we used to use capreomycin or kanamycin, but now the literature is that amikacin is better and less toxic than kanamycin. So in guidelines also it is preferred to use amikacin rather than caprio. But what we can do, sir, at this time, we can go for liquid culture DST. That will also suggest whether to use cana, amica or caprio. So at first instance, when there was high dose moxifloxacin resistance, at that time only, we could have gone for liquid culture DST.
for other drugs also. So they are not available for all drugs, but in Jaipur also they are doing only for 2 drugs. One is Moxie and another is Linezolid. So Dr. at least we Patni, can get that. Yes. yeah, Dr. Patni, we have sent this culture and sensitivity or culture only? सर मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि इसका डीएसटी लगा या नहीं लगा तो क्यों नहीं लग पाया, कंटामिनेशन हो गया था और इन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया या नहीं किया, ये तो मुझे रिकॉर्ड देखना होगा। और अदरवाइज हम लोग कर रहे हैं लिक्विड डीएसटी फॉर 1% मोक्सीफ्लोक्सासिन एंड लाइनजोलेट। So now can we do this thing that we can send this sputum sample to NRT Chennai? I am just asking. I haven't sent any patient, but I am just asking. Can we do at this time, because they are doing sensitivity for bedaquiline also there and delaminate. मैम इसका रिप्लाई मैं कर देता हूँ। नेशनल रेफरेंस लैब हमारी चेन्नई, बेंगलोर और LRS जो है हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली, यहाँ पे बेडाक्यूलिन और इसका अभी स्टार्ट उन्होंने कर दिया है, लेकिन पेशेंट की सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्रीडिटेशन उनका हो गया है। Okay. जी मैम। So we can send his sample for liquid DST and मैम वो एक बार उनसे बात करना होगा कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। Yes, yes. जी मैम। And that will be probably helpful. We get all sensitivity result for all TB drugs. We can even request them for all first line drugs also, so that if a patient is resistant to ethambutol and pyrazinamide, we need not to give those drugs. Otherwise, they will add up toxicity only. मैम पायराजिनामाइड का सेंसिटिविटी SMS में स्टार्ट हो गया है, अभी उन्होंने शायद सर्विस डिलीवरी स्टार्ट नहीं की, लेकिन एक्रेडिटेड हो गए हैं वो। Okay, okay. जी मैम। But this is really well worked up case, all studies done timely. Ma'am, can we take reaction from other doctors? Yes. If anybody, any DTO or any MO who is connected? सर इसमें कोमोर्बिडिटीज का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, कहीं साथ में जो है कोमोर्बिडिटीज वाला स्टेटस क्या है क्या नहीं है? डॉक्टर अखिलेश। जी सर। सर जी सर इस केस का सर एक्चुअली कोई भी एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटी हमें नहीं मिली सर। पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, पेशेंट इज ए यंग फेलो, एक्चुअली 22 ईयर का है, मेल पेशेंट है, तो ऐसी कोई कोमोर्बिडिटी नहीं थी सर एसोसिएटेड। और सर एक्चुअली प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन में सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थी सर, थायराइड और बाकी जो भी LFT सब नॉर्मल थी। अच्छा डॉक्टर अखिलेश, जो आपने एक चीज बताई थी कि इनके रिलेटिव कोई 4 इयर्स बैक पल्मोनरी टीबी से, तो उनको भी क्या DSTB थी या DRTB थी? सर यही एक्चुअली उस पेशेंट का एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, बट पेशेंट का एक्चुअली फर्स्ट टाइम में ही DRTB अपीयर हुआ है, तो अपन हाँ सर ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हो सकता है सर DRTB ही रहा हो, जिससे इस पेशेंट को डायरेक्ट DRTB मिल गया। But please search the record regarding his status. Yes sir. उसके बारे में पेशेंट से काफी डिस्कशन हुआ था, तो पेशेंट का जो ब्रदर था उसने ऊंझा से दवाई ली थी, लगभग 1.5 से 2 साल तक ऊंझा से कंटिन्यू प्राइवेट दवाई ली थी, जिसका रिकॉर्ड अभी उनके पास कागज नहीं है, पर 1.5-2 साल दवाई ली थी और उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लास्ट में वो एक्सपायर हो गया था। Likely he must be having MDR too. Definitely मैम। Any other DTO or any other medical officer? सर मैं एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा, जैसा मैम ने बताया कि इसमें अभी 2 ड्रग्स और हम ऐड कर सकते हैं, पास प्लस एमोक्सिक्लेव। सिलास्टिन की तो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि अवेलेबल है या नहीं है गवर्नमेंट सेटअप, बट क्या हम एट दिस टाइम, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने हुए हैं, पेशेंट को अगर कल्चर भी भेजते हैं तो 2 मंथ का वेट करना पड़ेगा, पेशेंट अभी डिटीरियरेट कर रहा है, उसको लिनेजोलेट इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो क्या हम एट दिस टाइम उसको 2 ड्रग ऐड कर सकते हैं जो प्रीवियस एडेड ड्रग्स हैं? DRTB कमेटी क्या डिसीजन ले सकती है ऐड ऑन करने का एट दिस टाइम? तो अभी फेलियर भी नहीं है, अभी तो डिक्लेयर भी नहीं किया जा सकता उसको, और कोई ड्रग्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या पास और एमोक्सिक्लेव हम ऐड कर सकते हैं उसको? And ethambutol also can be added. We have not given ethambutol it. तो दे रहे हैं मैम, अभी दे रहे हैं। दे रहे हैं। Okay. Ma'am, Dr. Shubhra, his question is that at this time can we add? Yes sir, that's what I've suggested. Before before the results of culture are available. Yes sir, just patient is young, to save his life we can add on at least amoxiclav, pass, and delaminate amikacin already added, so at least 4 new drugs will be there for patient.
And one more thing, sir, if availability of Celastin imipenem is there, it will be good because this drug is used in NTM also and has good result. I've used in 2 patients and it has good result. And literature also says that amoxicillin has role only if it is not alone has so good result if given together with Celastin imipenem. But at this point, amoxicillin and PAS should be added. Any other DTO? Please give your reaction and opinion. Dr. Yogendra from Alwar. सर नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, ओपिनियन शॉर्ट में। सर पहला तो निवेदन ये है कि इसको क्लिनिक को आप 1 से 2 रखवाओ सर प्लीज। अच्छा ठीक है, वो अभी नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। आप इसके बारे में रिएक्शन दो। इस समय सर ओपीडी में कम से कम 50 लोग खड़े। हाँ ठीक है, ठीक। 50 पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो शेयर करो आप इस पेशेंट के बारे में। सर एक्चुअली ये पेशेंट जो है इसमें पल्मोनरी वालों में ये देखने में आता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूअसली कई बार जो एक ड्रग से पहले रेजिस्टेंस आ गया ना, वो बाद में उससे सेंसिटिव भी हो जाता है। ऐसा कई मरीजों में देखा है। तो सर जो पहली बार में जैसे एमडीआर अगर अपन बिडाकुलिन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि उसमें मैक्सिमम मेडिसिन सर 8 या 10 ड्रग की डाल के उस पेशेंट को पहले नेगेटिव करें। इसमें चाहे मतलब हमें इंजेक्टेबल और बिडाकुलिन डेलामेलिड ये साथ में देनी पड़े, जैसे बाद में अपन ने उसमें किया तो एक साथ दे सकते थे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर डीटीओ? सर इस केस में भी ये हुआ था कि पेशेंट का जब हमने मार्च में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 2021 में अप्रैल में, तो एक बार तो इसका फर्स्ट लाइन एलपीएम में एच और आर सेंसिटिव आया था। और ऐसे काफी केसेज है हमारे पास जो सर रिपीटेडली डीआरटीबी का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनके कुछ बेसिलाई चूंकि आर से सेंसिटिव होते हैं, कुछ रेजिस्टेंट होते हैं। तो एक बार आर से सेंसिटिव आ जाता है देन रेजिस्टेंट आ जाता है। तो क्या हम सिंपली दे सकते हैं ऐसे केसेज में या फिर कोई रोल नहीं है? डॉक्टर शुभ्रा बताएं। क्योंकि इसको रिफार्मेसिन कभी एज पर पेशेंट को रिफार्मेसिन का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि जब ये डीएसटीबी आया था स्टार्टिंग स्मीयर पॉजिटिव आया था तो मुश्किल से 10-15 दिन ही इसको डीएसटीबी का ट्रीटमेंट दिया गया था, देन डायरेक्टली डीआरटीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। बट देन लेटर ऑन पेशेंट इज आरपीओ रेजिस्टेंट, वो बाद में आया उसकी रिपोर्ट। नहीं, लास्ट ईयर भी आया था, फिर 1 साल बाद दोबारा कराया तो एक बार सेंसिटिव आया, एक बार रेजिस्टेंट आया। क्योंकि सेंसिटिव आया था तो हमने डीएसटीबी का ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं किया, रिपीट कराया, देन पेशेंट रेजिस्टेंट। तो काफी बार ऐसा होता है। In these cases we can confirm with phenotypic method. Liquid culture DST से हम confirm कर लें या तो सिंगल लाइन फर्स्ट लाइन एलपीए को साथ में रखे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स की रिफार्मेसिन की और आईएनएच की लिक्विड कल्चर डीएसटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो रही है। उनकी अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट मैं प्रैक्टिकली इस केस में कर रही हूँ कि इस तरह के जो केस आते हैं जिनमें ऐसे डिस्क्रिपेंसी होती है, उनमें अपन एक अलग से कल्चर सेंसिटिविटी अलग से करा सकते हैं। और वैसे अपन एडिशन ऑफ न्यू ड्रग है कि फिर रिफेम्पिसिन का कभी एक्सपोजर नहीं हुआ तो इट मे बी बेनिफिशियल, वी कैन डू दिस एट दैट टाइम। यदि सेंसिटिव आया था और उसका एक्सपोजर भी नहीं था तो वी कुड हैव एडेड रिफेम्पिसिन। बट आरपीयू बी रेजिस्टेंट आने के बाद तो और उसका हिस्ट्री है एक्सपोजर की विद दिस कांटेक्ट विद हिज ब्रदर, सो दिस केस इज लाइकली टू बी अ रेजिस्टेंट केस। और बाकी केस में ऐसा इंडिविजुअलाइज्ड स्टेजिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक कैन वी डू इट इन डॉट्स? आई डोंट थिंक दैट इज। टेक्निकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, पाटनी सर भी हैं, कि कुछ केसेज काफी केसेज ऐसे आते हैं, क्या वो टेक्निकल एरर जो आर से एक बार सेंसिटिव आ गया और 5 दिन बाद ही रेजिस्टेंट आ गया, तो क्या वो टेक्निकल एरर होती है या पेशेंट्स के दोनों तरह की बेसिलाई प्रेजेंट होती है? बेसिक रीजन उसके मैं जहाँ तक लैब में मेरे पास सैंपल आते हैं, मुझे ऐसा रिपोर्ट मुश्किल से साल भर में 8-10 केस होते हैं जिनमें ऐसा डिस्कॉर्डेंस देखने को मिलता है। जी मतलब सर, मेरे पास लगभग 20,000 सैंपल्स आते हैं, उनमें 8-10 ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट लाइन एलपीए पहले सेंसिटिव आया और बाद में रिपीट में रेजिस्टेंट आया।
जी सर। लेकिन उसमें ये भी संभावना होती है कि कहीं ना कहीं सैंपल कहीं चेंज हो गया हो उस पेशेंट का, ठीक है ना, या लैब स्तर पे कोई सैंपल चेंज हो गया हो, तो हम लोग उसमें फिर देखते हैं कि सीबीनाट रिजल्ट और मतलब जो 2 रिजल्ट जिसके फेवर में जाते हैं उसको एक प्रायोरिटी देते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जी सर। मोस्टली में जो सीबीनाट से होता है वो फाइनल मान लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा डिस्कॉर्डेंस ज्यादा देखने को मिलता है। आई थिंक डॉक्टर लोकेश इज ट्राइंग टू से कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों पॉपुलेशन हो, सेंसिटिव भी पॉपुलेशन साथ में हो और रेजिस्टेंट भी। जी मैम। आई थिंक यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी मैम, कि दोनों पॉपुलेशन हो तो कुछ पॉपुलेशन, क्योंकि पेशेंट तो कम्प्लीटली डिटेरियोरेट कर रहा है, तो हम उसको एडिशनल बेनिफिट क्या ऐसे केसेस में दे सकते हैं अगर एक भी सैंपल उसका सेंसिटिव, क्योंकि टेक्निकली यदि पेशेंट का सैंपल सही है, किसी और का एक्सचेंज नहीं हुआ है और मशीन ने उसको डिटेक्ट किया है, तो डेफिनेटली सेंसिटिव पॉपुलेशन भी वहां होगी। ठीक है, वो तो लगभग हर केस में आपको मिक्स पॉपुलेशन तो मिलेगी। हाँ उसमें है कि प्रोपोर्शन का आपका क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। और मोस्टली यदि एक बार रेजिस्टेंट डिक्लेयर हो गया एलपीए में, तो ये मान के चलें कि वहाँ एमडीआर की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर पाटनी। अब क्या करना है नेक्स्ट इसमें? बस सर नेक्स्ट तो मैं सभी को एक तो धन्यवाद दूंगा, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शुभ्रा जैन को, प्रेजेंटर को और आपको, साथ ही सभी डीटीओ से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके यहाँ जो भी डिफिकल्ट टू ट्रीट केस है तो उसको केस को हमारे साथ शेयर करें ताकि वो भी एक प्रेजेंट किया जा सके, सबको बेनिफिट मिले। और लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि जाते जाते आप फीडबैक जरूर देके जाएं सभी लोग। ठीक सर है। बाकी आप जो डायरेक्शन देना चाहें सर। हाँ नहीं, थैंक यू ऑल डीटीओज। और मैं डीटीओज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो हैं उनसे भी और जो नहीं हैं उनसे भी मैं पाटनी साहब के थ्रू करूंगा कि वो क्लिनिकली भी थोड़ा इंटरेस्ट लें और इस तरह के जो भी केसेस हैं उनको यहाँ लाएं, और जो ये केसेस सुन रहे हैं उनसे भी उनका एक्सपीरियंस गेन होगा और दूसरे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में उनको लाभ मिलेगा। मैं एक बार पुनः डॉक्टर शुभ्रा जैन जी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी कंसल्टेंट्स और एसटीडीसी ऑफिसर्स का कि वो इसमें उपस्थित हुए और सभी डीटीओज का थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अखिलेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू लोकेश जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सेशन बहुत ही सचमुच बहुत इंटरेक्टिव था एंड आई रियली लाइक दिस सेशन सर। आई मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मुझे बड़ा मजा आया ये सुनकर। मजा तो नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट जाग गया था इस चीज में। तो मैं इस सब से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो प्लीज आप अपने रिव्यू जो फीडबैक है वो हमें जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक हमें हेल्प करेंगे इस सेशन को और भी आप सबके लिए इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो प्लीज आप सब अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। एक बार रितेश देखना 90,000 काटे कितने काटे।